a brushless DC motor, and because it is synchronous motor does not use any brush, so that is why it is known as brushless DC motor. So it is not a DC motor. Brushless DC motor only exhibit the characteristics of a DC motor, and their input is also DC because inverter is put before those synchronous motors. 3-phase inverter आपके पास रखते हैं, अभी ये है हमारे पास सिलेबस में. So we'll be studying this in unit 4 or 5. So then you have these brushless DC motors. Else you also have stepper motors and switched reluctance motors. ये दो तरह के स्पेशल मोटर्स भी और होते हैं आपके पास. तो ये भी जो है वो आपके पास सिलेबस में मौजूद है in the 4th and 5th unit. So we'll be studying all these type of magnets, all the drives that are employed to control these type of motors, and the characteristics they exhibit. ठीक है. So ये तो बात हो गई हमारे पास AC DC क्लासिफिकेशन की, सिंगल फेज, 3 फेज, वाउंड स्क्वायरल केज, रोटर टाइप के स्पेशल मशीन्स में ब्रशलेस डीसी, स्टेपर मोटर्स, स्विच रिएक्टेंस मोटर्स, ये सारी बातें होंगी. ठीक है. बट नाउ दीज डेज दिस टाइप ऑफ और से दिस technology has been quite outdated in terms of large rating, large ratings, because जो आपके पास डीसी मोटर्स होते हैं उनके ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस होते हैं. पहली बात, जो एडवांटेज थे जो आपने उसमें पढ़े भी होंगे मशीन्स में, कि दैट they have good high traction characteristics, good torque characteristics, easy to control methods available. But now because of the advent of power electronics, you have many type of drive systems or many type of power modulators that can actually control AC motors in the very same fashion that they exhibit the characteristics that are required or being met earlier by DC motors. So these are the advantages of these were the advantages of having DC motors, that their characteristics can be easily controlled. But now this can be very well done by AC motors using these power modulators or power electronic converters. The second thing is that for large power applications, generally we have commutator and brush gear arrangement in case of DC, so that makes it quite vulnerable to maintenance problems. ठीक है. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस आती है, because the large brush current has to be carried by those brushes. They are worn out and all these things happen. Commutator segments में short circuit होता है. So there are a lot of problems associated with DC motors. Still, for small applications, they are quite preferred, and permanent magnet type DC motors are suitable for that purpose. ठीक है. तो आमतौर से ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से जो AC में हम पाल मॉड्यूलेटर्स की वजह से AC मोटर्स जो हम चला पाते हैं, तो वो चीज़ बहुत आसानी से मीट हो जाती है. और AC में वो सारे डिसएडवांटेजेस, AC मोटर्स में वो सारे डिसएडवांटेजेस नहीं होते. So that is why AC is generally preferred, and because we have large rating converters available now, which employ thyristors, IGBTs, GTOs, MCTs, MOS control thyristors. ठीक है. ये नए हैं सबसे ज़्यादा. ठीक है. तो in that case what happens is that their control has now become quite easy and robust, the control of AC motors. So in most of the cases, say आप कह लीजिए even in traction, in case of Delhi Metro, you use a 3-phase induction motor, and obviously that is controlled by a power modulator, and it exhibits the very same traction characteristics what were exhibited by DC series motors. ठीक है. So ये सारी चीज़ें हैं. Even in case of जो आपके पास डीजल इंजन्स थे जो आप लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल करते थे, तो at later stages they were not only diesel engines. There were actually diesel generators that generated DC, and DC motors were used for that traction purpose. उसके बाद जो है आपके पास AC लाइन में रेक्टिफायर लगा के वो DC मोटर्स हम चलाने लगे. But now we directly use AC motors with a suitable power modulator such that those characteristics of traction are being met.
ठीक है. So the ease of control actually led to the say led to favorable conditions for DC drives, but after they are simply met by the converters and AC motors, they are outrightly now been put out of service. ठीक है. सो इसके सारे अपने एडवांटेजेस यही सब हैं कि दैट वी हैव. एक चीज़ और है दैट द साइज ऑफ ए डीसी सिस्टम इज क्वाइट बल्की एज कम्पेयर टू एसी सिस्टम्स. अगर आप 5 HP का डीसी मोटर देखें और 5 HP का ही एसी वो देखें आप इंडक्शन या इवन सिंक्रोनस, तो द साइज इज क्वाइट स्मॉल एज 2/3 या 40% 50% साइज होता है एज कम्पेयर टू ए डीसी मोटर. सो ये आपके पास एसी का एक और एडवांटेज है. So these are the types of motors what we have. Then we have special motors जो हमने ऊपर बात करी यहाँ पे, ये stepper motors, brushless DC. These all will be discussed in later chapters. ये जो आपके पास है, ठीक है, all these will be discussed in the later chapters. Now we come to power modulators. Power modulators are generally classified in 3 types: converters, variable impedances and switching circuits. Basically they are converters. ठीक है. जो हमारे पास दूसरे हैं converters की अगर हम बात करें तो we have 2 types of inputs available with us: fixed voltage and frequency AC and fixed DC. Whenever we talk about the supply sources, you always remember that we have constant value sources. If we talk about DC, so there is only one parameter in that in the terms in which it is measured, and that is voltage. When you talk about AC, you have the voltage level and frequency. So whenever you have any type of input to any of these systems, okay, you always talk about a constant source. कांस्टेंट अगर वो डीसी है तो खाली वोल्टेज लेवल के टर्म्स में होगा, और अगर एसी है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होगा. तो वट एवर कन्वर्टर्स वी हैव टेक दिस इनपुट, जो आपके पास जो आप फिक्स्ड इनपुट देंगे उसे, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्म और सुटेबल लेवल ऑफ सप्लाई. ठीक है. तो जो हमने पीछे बात करी थी पावर मॉड्यूलेटर्स की, तो आइदर यू हैव एसी और डीसी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्म. One thing is to be taken care of over here is that the input remains constant and stable. तभी हम लेके बात करते हैं. After that, when we will go into special cases, we will see that we have variable sources from which we have to run our systems. तो वो भी practical sources हैं, मगर वो थोड़ा से चीज़ें complex हो जाती हैं. We'll be also talking about that in the later stages of this course. But now, at this point of time, we'll be talking about only the constant sources, constant in terms of voltage in DC and voltage and frequency in case of AC. So the converters, what we have, AC to DC converters, very simple. These are rectifiers. Rectifiers are of 3 types: controlled, uncontrolled, half and full. ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन हो जाते हैं आपके पास. तो ये बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं. यू कैन वेरी वेल सी सिंगल फेज और 3 फेज का भी आप वो कर सकते हैं इसमें. देन यू हैव, आई विल बी पुटिंग ऑल दिस इनटू ऑन योर क्लासरूम. You all people are advised to join the classroom. It has been created. The links has been sent to you all. The second thing, the second type of converter what we have is AC to AC converter. ठीक है. These are simple AC called AC regulators. ये एकदम ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं. ठीक है. And either you have a single phase AC or a 3-phase AC, and the output of these converters is a lower level AC of the very same frequency and the same either single phase or 3-phase. ठीक है. After that we have DC to DC converters. These are known as choppers. ये भी आपने उसमें पढ़ा होगा. चॉपर्स को हम क्लासिफाई करेंगे अपनी ड्राइव्स में, जब हम इस्तेमाल करेंगे तब इसके फर्दर क्लासिफाई करेंगे इसे टाइप A, B, C, D एंड E.
chopper classification में, that on the VI plane, the A-type characteristics, A-type chopper exhibit the characteristics only or can be used only in first quadrant, B-type can be used in the second quadrant, C can be used in first and second, D can be used in third and fourth of VI plane, and E-type of chopper can be used in ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स. तो हम देखेंगे किस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है, क्या है. थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा इस चीज़ का, हाउ क्लास चॉपर्स आर क्लासिफाइड. Further, they are also classified as buck boost type of converters that can increase the voltage level in that. But here the thing is that both the characteristics are being utilized. The first thing is that the quadrant in which they can operate, or the types of classification based on A, B, C, D and E, and buck type, boost type or buck boost, whatever it is. तो दोनों चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे चल के. Then you have inverters, they convert DC into AC. ठीक है. तो these inverters can have a single phase output, a single phase AC output as well as a three phase AC output. दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें. एंड देन you can have a suitable inverter for that particular drive system according to the source and load requirements. ठीक है. तो ये तो हमारी बात हो गई सारी कन्वर्टर्स की. ठीक है. तो इसमें अगर हम इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो इन्वर्टर भी आपने अगर पढ़े होंगे तो PWM और स्टेप वेव दोनों तरह के इन्वर्टर्स हैं. इसकी डिटेल जो है जब हम ड्राइव्स पढ़ेंगे, AC ड्राइव्स, तो उसमें आएंगी. देन यू हैव अनदर टाइप ऑफ converter that is known as a cyclo converter. Cyclo converter is also an AC to AC converter, but it is different from AC regulator, such that it can also vary the frequency of the output. It can vary the level of the voltage, and it can also vary the frequency of the output in the multiples of the base or the fundamental frequency what is inputted to it. ठीक है. तो ये आपके पास अगर साइक्लो कन्वर्टर है तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सप्लाई को ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज पे दे देगा. वोल्टेज हमेशा जो है वो जो उसकी इनपुट वोल्टेज उससे कम होगी, और फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज बी ना इन द मल्टीपल्स ऑफ the input frequency. That means if it is F, then you can have an output of 2F, 3F, 4F like this. ठीक है. Then you have variable impedances. ये बिल्कुल ही कोर्स चीज़ है. कोर्स का मतलब जैसे आपने उसमें वो लगाया था, टैपिंग लगाते हैं एक रेजिस्टर में, तो उससे जो है फुल वैल्यू आपने उस पर लगा दी दोनों एंड्स पे, और बीच वाले टैप से जो है आप एक वेरिएबल वो ले लीजिए. तो द सेम एज दैट व्हाट यू हैव इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. ठीक है. और उसके बाद जो है then you have switching circuits. Switching circuits are generally circuits that are used to switch the power level circuits. Power level circuits का मतलब ये है कि switch on and switch off, the change of phase sequence, the reversal of terminals, ये सारी चीज़ें जो हैं जो पावर लेवल पे होनी है, ये सारी स्विचिंग सर्किट से करी जाती हैं. ठीक है. तो ये सारे, और ये टर्मिनल्स चेंज करने हैं आपको, जैसे आपके पास डीसी मोटर का जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आइदर यू हैव टू रिवर्स द फील्ड टर्मिनल्स और द आर्मेचर टर्मिनल्स. ठीक है. तो इसके लिए जो है आपको अलग से लेके लगाने की ज़रूरत नहीं होती. यू पुट अ सर्किट दैट एक्चुअली इंटरचेंजेस देम, द कनेक्शन पास थ्रू देम एंड दे आर इंटरचेंज्ड. ऐसे ही आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, you have to reverse the direction of rotation, so in that case you simply reverse the phase sequence of it. यानी दो terminals आप interchange कर दीजिए, so the phase sequence will be reversed in that case. So that is done by these switching circuits. तो switching circuits आमतौर से जो है वो ऑन ऑफ के लिए
और इंटरचेंजिंग द टर्मिनल्स के लिए, और इंटरचेंजिंग कई तरीके के लिए हो सकती है कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपरेशन चेंज करना हो, ये हम आगे भी सारी बात करेंगे कैसे होंगे, डिस्कनेक्ट करना हो, कनेक्ट करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए। एक्चुअली द थिंग इज दैट जो भी टर्मिनल्स में फेरबदल होगी या कनेक्शंस में फेरबदल होगी, तो दैट विल बी डन बाय दीज स्विचिंग सर्किट्स। ठीक है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट सोर्सेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मोटर्स व्हाट वी हैव, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द कन्वर्टर्स व्हाट वी हैव। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज और द नॉट एक्चुअली डिटेल्स, द स्पेसिफिक implementations of all these converters, motors will be discussed in next lectures, that how a drive system is developed according to the ratings of the load. So first we have to classify the load in terms of speed and torque, and then we have to choose certain characteristics that can be of a motor that can be made to run that load. तो हम पूरी ड्राइव की इसी हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो anybody wants to ask anything regarding the topics that are covered today? You people have joined the classroom? Yes, Yes, sir. sir. Good, let me see क्या हालत है। सर बताइए बताइए। सर मुझे मेल नहीं आया है गूगल क्लासरूम का। किसी अपने उससे ले लो, नहीं तो मैं अभी इस पे वो कर देता हूँ, रुक जाओ, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तुम्हारे इस उस पे लेक्चर पे, ठीक है ना। तुम लोग रुके रहो, मैं खोलता हूँ उसका क्लासरूम कोड लेकर। ये सर क्लासरूम कोड बता दीजिए। मैं उसी इसी मीटिंग पे बता रहा हूँ, तुम जरा सा रुको, चैट बॉक्स में मैं भेजता हूँ तो। ये नोट कर लो। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है तो अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट से ले लेता हूँ, उसकी फिक्र मत किया करो। ओके सर। ठीक है ना, ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।